गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज का वीडियो बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में आई एम बिहाइंड द सीन्स, बट जो लोग आएंगे कैमरा के सामने उन्होंने बहुत ही एक यूनिक अचीवमेंट हासिल किया है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको बताएंगे कि ये अचीवमेंट क्या है। क्या सोचा कि मुझे ये K2 पे करना है 16 दिन में अराउंड 4000 किलोमीटर। आपने कुछ सोचा है? आपने सोचा ही नहीं। When I was selected, I just wanted to go to Kanyakumari. Different type of terrain. This is climate. But people were very good everywhere. 100 किलोमीटर पर्यंत पोहोचलेला मी आज 4200 किलोमीटरच्या राईड पर्यंत पोहोचलो. कुठेही घाबरायची गरज लागत नाही, फक्त तुमची मनाची तयारी पाहिजे. We take average of 4200 kilometers, so it comes to 250 kilometers daily. मैंने इसके लिए एलिवेशन राइड्स किए इसके पहले फॉर 10 days बिकॉज द टाइम फ्रेम वाज वेरी लेस। बिकॉज कश्मीर का वैली है, वो व्यूज मतलब कोई ऐसे वीडियोस में कैप्चर नहीं हो सकते जो आंखों से कैप्चर हुए हैं। I did my cycling journey in January to lose weight. I was almost some 80-90 kilos. फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, त्याच्यानंतर तुमचा जो पीक आहे तो हळूहळू खाली येणार. त्यामुळे तुम्हाला निसर्ग सपोर्ट करेल. तुमच्यात जर हिंमत, तुमची जर कॅपॅसिटी असेल तर तुम्हाला हा जो निसर्ग आहे तो तुम्ही स्वतः आहात आणि हा निसर्ग तुम्हाला सपोर्ट करून. And you must understand that nutrition is very important thing. Like जैसे मेरा डिस्टेंस एजुकेशन है तो मुझे कॉलेज के लिए जाना नहीं पड़ता, तो मुझे साइकिलिंग में ही इंटरेस्ट है, तो मेरा हाफ टाइम तो पूरा साइकिलिंग ही करता रहता हूँ. इसलिए मैं बोल रहे कश्मीर टू कन्याकुमारी समझ लो अभी. Our most important thing is mentally you should be very strong. Never think that I can't do it. मंगला जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? कैसा था आपका एक्सपीरियंस? See, it was an awesome experience, lifetime experience, you can say. I was very happy when I got selected for this ride, and I enjoyed. See, this ride was organized by Fit India Movement and Dare to Gear Cycle Company. They managed it very well, and it was a great pleasure to ride with so many riders, 150 riders from all over India, and everybody was so nice. Nobody cared about their speed or anything. We were all together. अच्छा, तो एट द एज ऑफ 68, एज जो जस्ट नंबर आपने प्रूव किया है. मैं भी 45 का हूँ. मुझसे भी, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मुझसे भी थोड़े लोग इंस्पायर होते हैं, पर मेरे जैसे लोग आपसे इंस्पायर होते हैं. तो आप 68 में आपका मेंटल जो थॉट प्रोसेस है, आप मतलब आप ज़्यादा सोचती नहीं होंगी मुझे लगता है. आपने क्या सोचा कि मुझे ये K2 के करना है 16 दिन में अराउंड 4000 किलोमीटर? आपने कुछ सोचा है? आपने सोचा ही नहीं. When I was selected, I just wanted to go. Okay. But I consulted some riders, co-riders who have done this ride. अच्छा, So they all motivated me. ओके. Just go, Mangala, you can do it. So I just said I am going to do it. So mentally, it's all mental thing. We have to be prepared mentally to do it. To Kanyakumari, different type of terrain. This is climate. But people were very good everywhere. All throughout the journey, I met so many people. I just didn't ride. I mixed with all the local people, spoke to them. I made it. Then everybody used to ask, "Ma'am, how can you do it, ma'am?" I said, "You can also do it. Cycle every day, walk every day, run every day." So I motivated so many people. So they all were very happy to see me and clicked photographs with me. So I'm so happy like that I could do. यही आपकी खास बात है, आप मोटिवेशन बहुत करते हो. लोगों को ये वीडियो देखकर भी आप लोगों को काफ़ी मोटिवेट करने वाले हो. It was excellent. They helped us in every way, every possible way. See, Fit India Movement organized this and Dare to Gear, all the crew members, everyone was so good. We didn't have to worry about anything. Just we had to cycle. All the locations were given, breakfast point, lunch point, hotel point, where we have to reach. And anytime any emergency was there, 5 minutes they used to reach there. We didn't have to worry about, see, अब मैं क्या करूँ, what to do now, I'm in trouble.
and I'm very grateful to all the sponsors. लॉन्ग राइड्स अटेम्प्ट करने हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? See, रोज प्रैक्टिस करना चाहिए. एकदम endurance ride we can't do. We have to cycle every day and we have to do other exercises also. Strength training करना पड़ेगा, walking, running, everything we'll have to do. And see, never think that I can't do it. Everything is possible if we try. See, once also I didn't think I won't be able to do it. My husband and my daughter, they were scared. Why are you doing this? Then I said, see, I want to try. I am not a quitter. Anything I do, I take it as a challenge from childhood. So now I am like a child only. When I got this message, I can't explain you how I felt. And after finishing this, थैंक यू सो मच मंगला जी, एंड लॉट ऑफ पीपल विल बी इंस्पायर्ड आपका वीडियो देख के. थैंक यू सो मच. कीप इंस्पायरिंग एंड कीप राइडिंग. thank you. Thank you. हाय, मी सचिन पालकर, प्रभादेवी, मुंबई इथे राहिला. मी गेल्या 4 वर्षापासून सायकलिंग करतोय. पहिली राईड 100 किलोमीटर पासून चालू थोडी करता 100 किलोमीटर पर्यंत पोहोचलेला मी आज 4200 किलोमीटरच्या राईड पर्यंत पोहोचलोय. 16 दिवसात आम्ही श्रीनगर ते कन्याकुमारी राईड केली. या अगोदर मी मुंबई ते कन्याकुमारी राईड केली होती. त्याला मला 14 दिवस लागले होते आणि ही राईड अल्ट्रा सायकलिंग राईडमध्ये आली आमची आणि पूर्ण कंप्लीट करण्यात खूपच आनंद आला. बरेच नवीन मित्र भेटले, शरीराच्या वेगवेगळे अनुभव घेता आले, मनाचे विविध अनुभव घेता आले आणि ग्रुपमध्ये असताना या सगळ्या काही नवीन घडामोडी घडत असतात आणि एक नवीन इव्हेंट बनत असतो, तो आम्हाला बघता आला आणि स्वतः अनुभव करता आला. यामध्ये सर्वांचा सहभाग जेवढाच आहे तेवढा जो व्यक्ती म्हणून सहभाग आहे तो मला घेता आला. त्याबद्दल धन्यवाद सर्वांचे, आभार. हां, ज्यांना लॉंग राईड्स करायच्या आहेत तर मी म्हणेन ही अल्ट्रा सायकलिंग मोडमध्ये येते. गरज नाही की तुम्ही एवढ्या दिवसात करायला पाहिजे. मनाची तयारी करा, निघा, बाहेर पडा आणि हळूहळू का होईना पण तुमचा ध्येय बनवा आणि ते ध्येय पूर्तीकडे चला. वाटेमध्ये तुम्हाला सर्व सपोर्ट मिळतं. माणसं सगळ्या लेवलचा सपोर्ट आपल्या भारतामध्ये सगळ्या लेवलला तुम्हाला सपोर्ट होतं. कुठेही घाबरायची गरज लागत नाही. फक्त तुमची मनाची तयारी पाहिजे. सायकल हळू एक नेमात चालवली तर तुमचे कोणतेही ध्येय पूर्ण होऊ शकतात याची खात्री आहे मला. See, fast riders are going in their own speed. They were reaching fast, but we were doing it on our own speed. And I didn't just do it as a ride reaching Kanyakumari. I mixed with all the local people, spoke to people, school children, everywhere. See, I enjoyed my ride. एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. आई मीन मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी राइड करूँगा जो बैक टू बैक मेरे को 200+ किलोमीटर्स चलाना पड़ेगा. At least if we take an average of 4,200 kilometers, so it comes to 250 kilometers. Wow. Daily. But because in this ride, the main thing was like we were riding for the unity. It was a message for unity, and it was specially organized for Sardar Vallabhbhai Patel's 150th birth anniversary. So yes, thank you Fit India for selecting me, as well as Dare to Gear, who had done the selection process for that. माय नेम इज़ अनिकेत. मैंने K2K राइड किया October 31st to November 16, and met new friends from all community, all job profiles. You say मैंने इसके लिए एलिवेशन राइड्स किए इसके पहले for 10 days because the time frame was very less we got. So 10 days में मैंने एलिवेशन मैक्सिमम गेन किया जितना कर सकता उतना, and that's it. And साउथ वाले रोड्स जो है इट्स वन ऑफ द हेवन. मीन्स एक तरफ आपका माउंटेन्स चलते रहते, अच्छा. रोड्स अच्छे हैं,
द व्यू इज़ अमेजिंग। या महाराष्ट्र में आते वक्त ओके। जो प्लेट्यूज है वो व्यूज़ अच्छे हैं। कश्मीर का वैली है, वो व्यूज़ मतलब कोई ऐसे वीडियोस में कैप्चर नहीं हो सकते जो आंखों से कैप्चर हुए हैं। That is साइकिलिंग something- में वो एक बात है कि यू गेट ऑल द टाइम टू Yes. व्यू अराउंड। Yes. चलने के लिए व्हीकल्स में अपने को टाइम नहीं मिलता। Yes. दैट यू रियली एंजॉयड एंड Yes, I would thank Sai Sports Authority of India, ओके। Go Dare to Gear, who managed this ride totally. Especially Tarun and its team. सो मच। Thank you. Hi, I'm Santosh Balanagu. I'm basically from Andhra Pradesh. I moved to Bombay last year. I'm basically a chartered accountant. I work with a bank. I started my cycling journey in January to lose weight. I was almost some 80-90 kilos. What started as a goal to lose weight has become my passion. Then every day I used to ride. I ride 20-30 kilometers every day on weekends, some 100-200 kilometers. This Fit India movement has announced this K2K expedition. They have shortlisted 150 riders across the country. I'm one of them. No, this was purely out of road. I would say journey wasn't smooth, but no, if you have mental strength, you can do anything. You don't need perfect conditions to start. You just need courage to continue and willpower to complete. Valley of Kashmir, along with the beautiful mountains, downhills, uphills. That was the most memorable route. Yeah, thank you. तर ही जी राईड होती जी डेली दिवसाला ॲव्हरेजली 250 किलोमीटर मध्ये 3 दिवसात वेल प्लॅन होती. फक्त जी रायडर्सच्या क्षमता आहेत ह्या प्रत्येक वेळा कोणाचीही क्षमता अगदी उच्चतम क्षमतेचा पातळीचा असू दे, त्याला निसर्ग रोड ह्या सगळ्या पातळीतून जायचं आहे. त्यामुळे प्रत्येक दिवस प्रत्येक क्षण हा तुमचा प्रत्येक वेळेचा अनुभवाचा वेगळा असेल. तर त्यामुळे तुम्ही केलेलं प्रिपरेशन त्यावेळेचं आणि ह्या वेळेचं त्याच रोडवरती प्रत्येक कंडिशन वेगळ्या होत्या. कारण की काश्मीरमध्ये थंडी होतं वातावरण, त्याच्यानंतर खाली उतरलो तेव्हा थंडानंतर हळूहळू उष्णतेकडे गेलो आणि एक्स्ट्रीम विंडकडे आलो आम्ही हळूहळू करत. तर ह्या सगळ्या मुवमेंटमध्ये प्रत्येक वेळेला तुम्ही जे सायकल घेऊन जे आहात ते एक मेटल आहे, त्यामध्ये पण काही बरेच परिणाम होत असतात. रोडचे परिणाम आहेत, उष्णते त्याच्यापेक्षा पलीकडे आपल्या शरीरावर परिणाम होत असतात. फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, त्याच्यानंतर तुमचा जो पीक आहे तो हळूहळू खाली यायला लागतो. त्यामुळे तुम्ही असं मेंटली सबसे मेन है, मेंटल गेम है ये. तुम्हारी बॉडी कैपेसिटी हर वक्त धीरे 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 नीचे आने वाली है, लेकिन उसको तुमको धीरे धीरे वही लेवल पे लेके रखना पड़ता है हर वक्त. नहीं तो आप राइड नहीं कर सकते. लेकिन यही चैलेंज हमें स्वीकारना था, यही चैलेंज था जो हमने स्वीकारा है और यही चैलेंज लेके हम लोगों ने ये राइड कंप्लीट की. हमारे देश में वरती आहे ना पूर्णपणे ढगांची पावसाचे ढग यायला सुरुवात झाले पर्यंत आमच्याकडे पूर्णपणे ढगांची सावली होती आणि आम्ही ती राईड त्यावेळेला पूर्णपणे करू शकलो. तुम्हाला निसर्ग सपोर्ट करेल. तुमच्यात जर हिंमत, तुमची जर कॅपॅसिटी असेल तर तुम्हाला हा जो निसर्ग आहे तो तुम्ही स्वतः आहात आणि हा निसर्ग तुम्हाला सपोर्ट करून हे तुमच्याकडून कंप्लीट करून घेईल. शेवट Hello, I am Richik Sinha. I basically belong from Bokaro Steel City in Jharkhand and I work here at India Post in Mumbai. So basically I am a cyclist since past 2 to 3 years when I purchased a bicycle just for the purpose of commuting and adding fitness to my lifestyle instead of using the local train. Afterward, one of my cyclist friend introduced me to cyclothons and since then I was doing 100 kilometers cyclothons. And cycling is my regular, and since then I rode it. So basically the experience about K2K is, India is you can say India is also called a mini world. So basically you are going to see too much cold at Srinagar, everything, and after that you are going to experience lots of hot climates everywhere, especially there. Yes, especially the climate. So ride well, ride safe and be healthy. नहीं उसका कुछ टेंशन नहीं. मेरा डिस्टेंस एजुकेशन है तो मुझे कॉलेज के लिए जाना नहीं पड़ता,
तो मुझे साइकिलिंग में ही इंटरेस्ट है, तो मेरा हाफ टाइम तो पूरा साइकिलिंग ही करता रहता हूँ, इसलिए मैंने कॉलेज ही वैसे ले कि मुझे सिर्फ एग्जाम में जाना पड़े। बोल रहा है काश्मीर टू कन्याकुमारी, समझ लो अभी। ओके, सम पीपल टुक आवर फोटोज, किधर किधर सेलिब्रेशंस भी हुए हैं। महाराष्ट्र में पगड़ी बिगड़ी बांध के साड़ी बीड़ी उनको वुमेन्स को ये किया है पॉलिटिशियंस, ऐसा बहुत, मतलब पेट्रोल पंप्स में हमको। Hello everyone, my name is Ashish Aroskar, founder member of Pedal Warriors. I was lucky to be selected as a crew for K2K. It was an amazing experience. Kevin है, तो बाकी भी सारे जो crew members थे, we all used to kind of help each other to help the riders. Riders के point of view से देखो तो physically तो चाहिए, because when you are doing 250-300 kilometers every day, you need to be physically fit, you need to have that much amount of cycling under your belt. But apart from that, the most important thing is mentally you should be very strong, because जब इतना बड़ा राइड करते हो तब कुछ फटीग होता है, कुछ इंजरीज होते हैं, एंड ट्रस्ट मी देयर हैव बीन लॉट ऑफ इंसिडेंट्स वेयर mentally people who are mentally strong have done it in spite of injuries, be it physical injuries, कोई है किसका पैर दुख रहा है, किसी का हाथ टूटा है, and trust me, these are actual real scenarios, and in spite of that they have completed the journey. So mind को strong करना वो एक सबसे बड़ी चीज़ है। अगर किसी को K2K करना है तो फर्स्टली प्रैक्टिस वेरी हार्ड। आप जैसे राइड करते हो वैसे करो, थोड़ा सा और एंड्योरेंस बढ़ाते जाओ, बिकॉज इफ़ यू हैव टू इट इन 15-16 डेज, तो 250 किलोमीटर्स करना एवरी डे, यू शुड एटलीस्ट प्रैक्टिस 150-200 फॉर अ फ्यू टाइम्स, तो आप कर सकोगे। सेकेंड इज़, एज आई सेड, टू कीप योर माइंड स्ट्रॉन्ग एंड ट्रस्ट योर बॉडी, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। ओके, थैंक यू सो मच। मी 18 वर्षाचा आहे आणि फर्स्ट इयर BComमध्ये मी आता स्टडी करतो आहे आणि सायकलिस्ट आहे मी। तुमचा अनुभव कसा होता K2Kमध्ये? अनुभव माझा खूप चांगला आला, म्हणजे ह्या वयामध्ये मी काश्मीर ते कन्याकुमारी 4000 किलोमीटर, ते पण श्रीनगरपासून स्टार्ट करून कन्याकुमारीपर्यंत वेगवेगळ्या वेदर टाईपमधून, आणि असं सगळं ट्राय करून तर खूप मजा आली, मला खूप आवडलं, म्हणजे सगळं बघायलासुद्धा भेटलं, डोंगरातून खाली तर सनसेट, जे मजा येत होती मला खूप। अच्छा, हो, मी यंगेस्ट राईड, फारच मजा आली। मज्जा तर आली खूप, थोडे चॅलेंजेस पण आले, ते तर काय तशी राईड होती त्याच्यात येणारच होते ते, पण जबरदस्त एक्सपिरियन्स होता। टीज प्रॉपर न्यूट्रिशन आणि गुड क्वालिटी शॉट्स आणि सायकल तुमची प्रॉपर सर्व्हिस करून घेऊन जा, हे खूप महत्त्वाचं। स्पॉन्सर्सनी फिट इंडिया, यूथ फ्रेंड स्पोर्ट्स आणि मॅनेज बाय डेअर टू गेअर होतं, खूप चांगलं त्यांनी मॅनेज केलं, आणि स्पॉन्सरसुद्धा जे हॉटेल स्टे वगैरे एकदम टॉप क्लास त्यांनी दिले होते, जे लंच असायचा, डिनर असायचा, इव्हेंट त्यांनी केला मॅनेज। थैंक यू सो मच। डिस्टर्ब हो जाता है पूरा अंदर का सिस्टम, उसको ये संभालने वाला है, तो उस वक्त तुमको प्रॉपर चाहिए, तो पूरा, क्योंकि मैंने देखा को हमारा रात का खाना रहता था वो पूरा प्रॉपर रहता था, लेकिन डाइजेशन नहीं हो सकता है, तो उसके लिए आपको दिन के राइड में बनानास और वो संतरा भास्कर सर थे, और आपकी कॉफ़ी या उसके ऊपर आप प्रॉपर राइड कर सकते हैं, नहीं तो पाउडर सभी है सपोर्टिंग, लेकिन उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं।
Hi, I am Kevin Peter. I am a sports and exercise science professional, and I give guidance for nutrition as well. So I was a crew member for K2K ride, and my main focus was on giving nutrition guidelines, helping nutrition supply, and just maintaining the quality that is needed to sustain such a long ride. So that was my main role. So as a crew member, I also was involved in helping with other general help stuff. And how was your experience for the 16 days? It was grueling. Like the main part was a lack of sleep and the fatigue build up from like people reaching very late at night. So that was very taxing for the riders, and as a crew member as well, sleep was less, but since we didn't have to exert, it was fine. Okay. And any message you would like to give in terms of diet and nutrition to riders who are planning for a long ride? Yeah, for riders who are planning for long rides, I would say make sure your hydration is planned. So when I mean hydration, it doesn't just mean water. It means the electrolyte salts. It means food. So fruits, vegetables, they all are part of your hydration. So plan it in advance and take carbohydrate like supplies, so carbohydrate gels or bars, anything to help with the ride. So yeah, plan prior. Thank you so much. My role in K2K was I was a crew. I joined as a crew. This was K2K is basically Kashmir to Kanyakumari. It was 4,200 kilometers, 16 days of cycling. I got an opportunity to join as a crew. Once we reached Srinagar, it was a 16-day tour wherein my job was basically to ensure that all riders are hydrated. So that was my part. So and eventually I did get an opportunity also to cycle my fellow riders cycle. I must have done somewhere about 1,000 to 1,500 kilometers of cycling during the whole K2K session. It gave me a lot of insights of how crew members face day-to-day challenges and all. I thought it was always a rider's thing wherein they have to mentally be prepared to ride such long distance, because 280, 300 kilometers daily cycling is something which is not very easy. I mean, one day you can do it, 2 days you can do it, but you have to do it continuously for 16 days. It was incredible that these riders, 150 riders, it was celebration. Thanks to Fit India movement, Dare to Gear was the organizer, and the whole thing was sponsored by Government of India. 16 days trip. So we were able to, the government, you have to learn your body and understand what your body is able to do. My suggestion to all, hydrate and have good nutrition food. This will help you. Thank you so much. K2K राइड मतलब जैसे वो बूढ़े लोग का होता है ना कि एक उम्र के बाद 4 धाम का यात्रा करना, वो टू डू लिस्ट में होता है, वैसे हर एंड्योरेंस साइकिलिस्ट के एक दिमाग में होता है कि कभी ना कभी ज़िंदगी में K2K राइड तो करना ही है. तो मेरे भी बकेट लिस्ट में वो था और ऑप्शन आया, चांस मिला तो फिर मैंने कर दिया. बस मेरे पास साइकिल एक हरकुलिस का है जो 12,000 की साइकिल है, एकदम बेसिक साइकिल है, उसमें 21 गियर है. तो एक्चुअली साइकिल इतना मैटर नहीं करता है एंड्योरेंस में. रेसिंग में ऑफकोर्स मैटर करता है, रेसिंग में तो मतलब बहुत फ़र्क पड़ता है, बट एंड्योरेंस में आपके पास साइकिल छोटा हो बड़ा हो कौन से ब्रांड का हो वो इतना मैटर नहीं करता है. आपको बस वो मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि आप इसमें भी कर, तो मेंटली अगर आप स्ट्रांग हो तो आप किसी भी साइकिल पे कर लोगे, बस आपको मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए. Three cheers to Fit India. Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! 3 cheers to Dare to Gear. Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! 3 cheers to Pedal Warriors. Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Hip hip.